दोस्तों हमारे YouTube चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस सम स्टॉक्स इन स्टॉक एनालिसिस पार्ट 2 और इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले या फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेंचुरी प्लाई, जो कि लास्ट सम मंथ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6 मंथ में इसने हमें 130% के पॉजिटिव रिटर्न शो किए हैं, विच इज ऑल्सो गुड इन दिस बुलिश रैली एंड गैव 57% रिटर्न इन लास्ट 3 मंथ्स, 25% इन लास्ट 1 मंथ एंड रिसेंटली वी मेड पोजीशन अगेन इन दिस स्टॉक। हमने दोबारा से इसमें एक बार पोजीशन बनाई है 309 के प्राइस पर एट द रेट 309 एंड नाउ इट में remain continuous in an uptrend up to 350-360 level where it has moderate resistance on weekly candle chart pattern. So you may hold this if market takes reversal और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मार्केट अगर रिवर्सल करती है तो ये स्टॉक 350 और 360 के लेवल तक आने वाले समय में अपनी अपसाइड मूवमेंट शो कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज जागरण। इट इज अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी विच हैज मार्केट कैप ऑफ 1340 crores. But for short-term position, this is looking good and also showing a breakout on daily candle chart frame. And yesterday, it has shown good upside movement with good volumes and may remain positive in upcoming days up to 53, 54 and 55 levels. And one thing I want to remind you that in last video of swing trading, I taught you that when a stock shows multiple support levels एट एनी लेवल या पर्टिकुलर लेवल पर, किसी भी लेवल पर जब कोई स्टॉक अपनी मल्टीपल सपोर्ट लेवल शो करता है, देन इट शोज ए स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल. सो यू कैन इजिली सी इन दिस दैट दिस स्टॉक टुक सपोर्ट ऑफ 100 and 200 simple moving averages on day candle chart frame. So always try to search a stock which has good bullish signals and multiple support levels at any level in a stock. So now it may remain bullish up to 53, 54, 55 levels where it has strong resistance of 100 SMA on weekly candle chart frame. So you may hold up to 53, 54, 55 levels if you want to enter. Dear members, next stock is Tata Chemical. Dear friends, I many time remind you about this stock that it had strong resistance on at the level 550 on weekly candle chart frame. But when this took breakout, I informed WhatsApp group members about this stock. Now it is showing good upside movement after breakout and may remain positive in upcoming up to next resistance level of 700 and 750 levels, which is trading after breakout on weekly candle chart frame. A good opportunity for midterm, and after breakout already has shown good upside 10 to 15% upside movement in recent weeks. So hold this stock, a good stock for midterm. You may hold this. Who want to enter may enter near 600 levels. So if you are holding, you should hold this stock. Next stock is Asian Paints, a very good company, a large cap, which is now trading just at 100 DMA support on daily candle chart frame. So you are getting this stock at good price and good level, also trading at 100 DMA and 200 DMA support. So this is good time to consider this stock for fresh entry, and already trading with much discounted price, made a high of 2800 nearest. So who want to make fresh entry in this stock may enter, now trading at just 100 DMA support. In upcoming days it may show good upside movement. If market remains positive, then it will easily touch 2500, 26. And next stock is BPCL. I suggested this stock at the rate 380 level when market fall recently before budget announcement, and after this it went up to 440 level, which is also a good return in a short period. But still this stock is following a symmetrical triangle pattern on weekly candle chart frame. So still now it is good opportunity to make position in this stock at the rate CMP or at some dips or discounted price. So friends, today we discussed 5 stocks. Tomorrow we will again discuss some stocks. Till then, take care, keep learning and keep earning. And who did not subscribe my channel yet, please subscribe.